Hey guys, welcome back to my channel. My name is Aniket and I'm back with another fresh informative video. In today's video, I'll be talking about all the major and minor updates that are taking place regarding Canada travel restrictions from India, particularly for the people who are coming late this December 2021, or let's say in the January intake, or maybe later in 2022. सभी के लिए जो major policies है, updates है by IRCC or let's say the Canadian government, सभी कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा with screenshots, with proofs. So पूरा कुछ clear हो जाएगा what are the steps that you need to take for the students, for the working officials, anyone coming from India. सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. So वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, because 100K is our goal, we have to hit it. And वीडियो को पहले ही लाइक कर दो because a lot of crucial information is coming on your way and definitely it motivates me as well. So without any further bullshit, let's jump into the video. Alright, so if you aren't aware about the Omicron cases, which is also called the Delta variant, it's increasing in Canada, specifically in the Ontario province. Alright, Ontario reported, as you can see in the screenshot as well, Ontario reported 928 new cases of COVID-19 on Tuesday, and on Monday it was 887. That means it's growing slow and steady, but cases increase हो रहा है, भले speedily ना हो, but हो रहा है. And if it continues, it can lead to, I'm not sure, but it can lead to changes in policies by the Canadian government, or let's say the IRCC. Okay. कुछ पॉलिसीज ऑलरेडी चेंज हो गया है जिसके बारे में अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट मेजर अपडेट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. Alright, so let's start with the major border updates that Canada has adopted due to the Omicron variant. As you can see in the screen, starting January 15th, 2022, international students 18 years and older will be only allowed to enter the country if they're fully vaccinated with one of the vaccines approved by Health Canada. Children under the age of 18 must continue to follow testing, quarantine and other entry requirements. It simply means कि January 15 से ये वाला न्यू पॉलिसी है जो अप्लाइड हो जाएगा. इसका मतलब है सिंपली 18 ईयर्स से नीचे तो कोई आ नहीं पाएगा कनाडा में. दे विल बी डिनाइड एंट्री, एंड 18 ईयर्स से ऊपर जो है उनको आने दिया जाएगा, बट दे हैव टू बी वैक्सीनेटेड बाय वन ऑफ द अप्रूव्ड वैक्सीन्स बाय हेल्थ कैनेडा, जो मैं वीडियो के लेटर फेज में डिस्कस करूंगा, बने रहना. एंड ऑल्सो दे मस्ट फुलफिल ऑल द टेस्टिंग, क्वारंटीन एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स दैट आर सेट बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, और लेट्स से IRCC. Moving on to a second major update, which is updated border measures for eligible fully vaccinated travelers entering Canada. Alright, screen में देखो, starting January 15, 2022, to be able to enter Canada as an international student 18 years and older, you must fulfill these conditions. Number 1, you should have a valid study permit. Number 2, you should be fully vaccinated with Government of Canada approved vaccines. List पे वीडियो के एंड में शेयर करूंगा. And number 3 is be attending a designated learning institution. You should attend at a DLI approved institute. इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो वीडियो में एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ. स्क्रीन में थंबनेल है, आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो. You'll be getting all the knowledge about what is a DLI institute, DLI नंबर क्या होता है, कैसे DLI approved institute को खोजना है, what are the pros and cons, everything is covered in that particular video. And lastly, you should be meeting all the other travel restrictions and exemptions for international students. अगर आप ये सारे conditions को fulfill करते हो, then you are eligible to travel after 15th of January 2022. That's the update. Now, there's a very good update for the people who were worried all the time because they are vaccinated with Covaxin and it wasn't approved by WHO before. But now, as per Canada and India's tweet, आपको screen में दिख जाएगा, it has been declared that more number of vaccines have been approved by WHO and Canadian government, which includes Covaxin. Super good news. सबसे पहले Covaxin का नाम है, along with Covilo and CoronaVac. Just to confirm this news, because ये एक tweet है, मुझे IRCC से जानना था, तो I just checked their website to confirm this news, and luckily this is official. And as you can see in the screen, vaccines accepted by Government of Canada for the purpose of travel to and within Canada are mentioned below. AstraZeneca, Covishield तो है, फिर हम लोग को कोवैक्सीन दिख जाएगा, जॉनसन एंड जॉनसन पहले से ही था, मॉडर्ना, फाइजर, फिर सिनोफार्म एंड सिनोवैक, ये दोनों नए वैक्सीन है. सो इफ यू आर वैक्सीनेटेड विद दीज वैक्सीन्स, यू आर कंप्लीटली एलिजिबल टू एंटर कैनेडा, बी इट दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर. सुपर गुड न्यूज़ फॉर द पीपल हु आर वरीड. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अबाउट एन अपडेट अबाउट क्वालिफिकेशन एज अ फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर. आई रिपीट, अपडेट अबाउट द क्वालिफिकेशन एज अ फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर. हाउ डू यू नो एक्जैक्टली इफ यू आर एलिजिबल टू एंटर कैनेडा, इफ यू आर क्वालिफाइड एज अ फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर? आपको समझ में कैसे आएगा? फॉर दैट देयर आर सर्टेन नॉर्म्स दैट इज बीन स्टेटेड बाय IRCC. स्क्रीन में आपको दिख जाएगा. टू क्वालिफाई एज अ फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर टू कैनेडा, यू मस्ट फॉलो दीज रूल्स विद इन द लास्ट 14 days. Not have been in a listed country with Canadian COVID-19 Omicron restrictions. आप उन कंट्री में नहीं रह सकते जहाँ पे कैनेडा ने बैन लगा के रखा है about this Omicron variant. This is the first step. Second is have received at least 2 doses of a vaccine accepted for travel, जो Canadian government ने accept किया था, मैंने नाम ऑलरेडी बता दिया है, और a mix of 2 accepted vaccines. For an example, आपने first dose Covishield का लिया है, second dose Covaxin का लिया है, फिर भी चलेगा, you are eligible to enter Canada. बाकी रूल्स पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. This is the third update, which is again a good one because it tells you if you're eligible for fully vaccinated traveling.
Alright, this particular update can really make or break your travel to Canada and it's about visa medical. बहुत जन को पता नहीं है कि जो वीसा मेडिकल हम लोग करते हैं वीसा फाइलिंग के पहले वो एक्सपायर हो जाता है. Its validity is 12 months and as per Canada and India tweet, it's been clearly mentioned that your medical exam results are good for 12 months only from the date your medical was assessed, not the date of your original exam. जिस दिन आप एग्जाम देने गए थे हॉस्पिटल उस दिन से नहीं बल्कि जब आपका टेस्ट रिजल्ट मिला आपको उस दिन से 12 मंथ्स तक वैलिडिटी रहता है. ट्वीट में आपको दिख जाएगा इफ योर वीसा हैज बीन पुट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड प्लीज वेट फॉर 4 weeks आफ्टर योर सेकंड मेडिकल एग्जाम बिफोर ट्रैवलिंग. आपने रिन्यूअल के लिए मेडिकल एग्जाम दिया उसके बाद रिजल्ट्स आने तक अपडेट होने तक जीसी की में 4 हफ्ता का टाइम लग जाता है. सो यू हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. उस पीरियड में आप ट्रैवल नहीं कर सकते. ऑल्सो लास्टली इट्स बीन क्लियरली स्टेटेड बाय कैनेडा एंड इंडिया दैट student and workers who must have a valid medical examination prior to traveling to Canada. If your medical has expired, you really cannot travel because your visa will be invalid. ठीक है, आपको रिन्यू करा के जाना होगा. मेक श्योर टू कीप दिस इन माइंड बिकॉज एयरपोर्ट पे जाओगे फिर वो लोग पंच करेंगे दिखाएगा इनवैलिड देन यू कैन रियली बोर्ड योर फ्लाइट. आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा. मूविंग ऑन टू अ सिक्स्थ अपडेट व्हिच इज यू गोना ट्रैवल टू कनाडा और एंटर इनटू कनाडा ड्यूरिंग योर वेकेशन. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल. फॉर एन एग्जांपल आपका सेमेस्टर ऑनलाइन चल रहा है. फर्स्ट सेमेस्टर आपका जैन से अप्रैल तक हुआ, फिर सेकंड सेमेस्टर मई से अगस्त 31 तक हुआ. नाउ इफ यू आर इन अ डिग्री प्रोग्राम यू विल बी हैविंग योर वेकेशंस फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर. उस पीरियड में आप कनाडा एंटर नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते. इट्स नॉट एज पर रूल. अगर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आपको कब ट्रैवल करना है बिफोर और आफ्टर द वेकेशन जो डेट चाहिए देन यू कैन सिंपली text or mail your student advisor of your particular university or college. Also there's another update regarding this. इसी के तरह है कि you cannot travel 4 weeks before the start of your course as officially mentioned by Canada and India's tweet, which is attention students, please do not plan your travel more than 4 weeks before the start of your course. We know you are anxious to get settled, but coming to Canada earlier will result in you being refused entry or denied boarding. That's it. Keep these updates in mind because अगर आप फॉलो करोगे देन आपका जर्नी हैसल फ्री होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. Alright, now let's talk about the updates about direct flights and indirect flights to Canada. अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल डायरेक्ट फ्लाइट से आते हैं देन आपको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करना होगा. स्क्रीन में आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा. आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग मच बिकॉज इट्स सिंपल, जस्ट रीड इट, यू विल अंडरस्टैंड. एल्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा. ठीक है, पूरा पढ़ लेना. ऑल्सो यू कैन सी दैट यूजफुल लिंक्स फॉर बुकिंग द कोविड-19 टेस्ट एट दिल्ली एयरपोर्ट दिया हुआ है. मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना हाउ टू बुक द RTPCR टेस्ट. वेबसाइट आपको मिल जाएगा. ऑल्सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्रोसीजर हाउ एक्जैक्टली टू बुक द टेस्ट फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट, क्या पैकेजेस होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर, कितने घंटे पहले करवाना होता है, देन आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर यू. कमेंट डाउन बिलो अगर चाहिए. एल्स अगर आपको नहीं चाहिए, किसी और का वीडियो देखना चाहते हो, जस्ट सर्च इन यूट्यूब या फिर मैं और ईजी कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में किसी और का वीडियो मैं डाल दूंगा. दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. कमिंग टू आवर नेक्स्ट अपडेट विच इज temporary border restrictions and measures to address COVID-19 Omicron variant of concern. आपको स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा. Fully vaccinated travelers who are selected for arrival testing. मैं एक चीज़ बता दूं कि वो लोग रैंडमली पिक कर रहे हैं लोगों को कि अचानक से किसी को बता दे रहे कि गो डू द RTPCR टेस्ट. ठीक है, जस्ट टू चेक कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. ऑलराइट, तो ऐसे करके रैंडम पिकिंग हो रहा है. बट एज यू कैन सी इन द स्क्रीनशॉट must quarantine in a suitable place until they receive a negative test. जो जिनको भी वो लोग पकड़ेंगे for random testing, रिजल्ट आने तक वो लोग को एक suitable place में क्वारंटीन करना होगा. They should be having a suitable quarantine plan. सभी को एक क्वारंटीन प्लान लेके आना है. Make sure you know this. Also, the government of Canada is increasing the number of fully vaccinated travelers being selected for testing to reach 100% of vaccinated travelers in the coming weeks. Hope you understand this update. Now let's talk about the countries that Canada has banned for Omicron cases. Alright, कनाडा ने बैन किया है बोस्वाना को, इजिप्ट को, एस्वाटिनी, लेसोथो, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे. इन कंट्रीज को बैन कर दिया है कंप्लीटली बिकॉज इट्स बीन गेस्ड दैट ओमिक्रॉन हैज originated from these African countries, so completely banned है. And also you should be knowing that आपको कोई भी indirect flight इन country से होके नहीं लेना है. These countries shouldn't be your via. Okay, आप किसी भी दूसरे country से ले लो और I'll recommend just go for direct flights. It's the safest way to reach Canada right now in this current situation. अभी थोड़ा इंडिया के बारे में बात करते हैं, केसेस के बारे में. ऑलराइट, तो पीपल और स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग फॉर फ्लाइट्स टू गेट ओपन फ्रॉम मुंबई, आई एम रियली सॉरी टू टेल यू दैट देयर इज वेरी लेस होप फॉर दैट. अभी तो दिल्ली से ही खुला है, बट जिनका होप है, जिनका एक्सपेक्टेशन है कि मुंबई से खुल जाएगा तो इट विल वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू फ्लाई फ्रॉम मुंबई. But I'm really sorry, it's not going to happen right now at least because Mumbai में नए cases मिल रहे हैं. And as per the news, I'll attach the screenshot, just see. India's 4th Omicron patient near Mumbai was unvaccinated.
ठीक है, 33-year-old man from Maharashtra who traveled to Mumbai from South Africa. I said you, South Africa is the origination. उन countries को completely ban करके रखा है. Via Dubai and Delhi late last month has tested positive for the Omicron variant of the coronavirus in the 4th such case confirmed in India. So alright, मुंबई तो अभी खुलने नहीं वाला है. जो भी प्लान करना है इंडायरेक्ट हो डायरेक्ट हो, दिल्ली से करो. That's my recommendation and that's the update for this particular point. Coming to the third last update of this particular video, which is for the students who are coming in Feb or the students who have already booked and confirmed their tickets in Feb 2022. According to CTV News, it's been stated that mandatory hotel quarantine measures for travelers to come into effect Feb 2022. February से mandatory quarantine हो जाएगा. Be of complete 14 days आपको रहना ही है. Now it's not mandatory but as cases will increase, February से Canadian government ये वाला rule लागू कर देगा. So make sure you know this. Also it's been written that under the new rules, travelers returning to Canada will be required to take a COVID-19 test at the airport at their own expense. खुद के पैसे से कराना होगा. They'll then be required to spend the first 3 days at their quarantine at a supervised hotel while awaiting the results and foot the bill of the stay. Expected cost is upwards of 2000. ठीक है, आपको 3 दिन रहना होगा एक recommended hotel जो government बता देगा आपको, and the cost is expected to go around 2000 or just quite higher than 2000. All right, so 1.2 lakhs to 1.5 lakhs का आपको एक्स्ट्रा बजट लेकर चलना होगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अपडेट, जो पहले भी था बट बीच में चला गया था. नाउ इट्स अगेन कमिंग इन February 2022. Moving on to a second last update which is also very important, which is अभी तो बस रैंडम पिकिंग चल रहा है. एयरपोर्ट पे किसी को बोल दिया कि RTPCR करो, किसी को और बोल दिया करो, बट राइट नाउ दे आर टेलिंग, इट्स बीन जस्ट डिस्कशन के रूप में है ये कनाडा में कि कभी भी ये वाला रूल लागू हो सकता है कि सभी को मैंडेटरी RTPCR टेस्ट कराना होगा जस्ट आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा एंड देन दे हैव टू स्टे 3 days until they get their reports, right? Alright, so now let's end this video with a good point, good update, a good news which will increase your hope and confidence about studying in Canada, entering in Canada and fulfill your dreams, right? मैंने ऑलरेडी बहुत सारे गंदे गंदे अपडेट दे दिए हैं. मुझे खुद अच्छा नहीं लगता एक्सप्लेनिंग अबाउट दोज पर्टिकुलर अपडेट्स, बट आई रियली कैन चेंज द सिचुएशन, राइट? सो प्लान अकॉर्डिंगली, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर अपडेट. IRCC has mentioned in its tweet that international students, we are extending the time you can study online from outside Canada and have it count towards PGWP eligibility. Post graduation work permit आपको मिलेगा even if you're studying online. ठीक है, वो जो period था वो extend कर दिया है. So nothing to worry if you're stuck in India, if you cannot travel in Canada for any reason. ठीक है, आपका online study करने का period extend कर दिया गया है by Canadian government, by IRCC, and it will be counted. ठीक है. Alright guys, those were all the major updates. I've covered everything in a strategic step-by-step manner. अभी बस आपको ये सारे दिमाग में रखना है. कंसल्टेंट से बात करो, उनको बताओ ये अपडेट्स है because they don't really care about you. Alright, एकदम simple truth है. You have to make your journey perfect and for that you have to talk to the consultant, communicate with them, forward these news, forward these updates so that you have a good experience coming to Canada. You have a hassle-free journey. Alright, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर दो. एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिकॉज 100K इज अ गोल, वी हैव टू हिट इट. ऑलराइट, टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी. मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ. टाटा.